Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy at your homes. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you all know that we are on unit number 1, Sun, and today is its second lesson. So before moving on towards your main lesson, let's quickly recap what we have done in the previous lessons. So you have to answer a few questions. Quickly tell me how many directions are there. Quickly count. Very good. 4 directions. From which direction the sun rises? The sun rises in the east. Very good. In which direction the sun sets? It sets in the west. Very good. Which direction is opposite to south? Which direction is opposite to south? Very good. If south is at your back, then what is at your front? North. Very good. What is the direction at your back if you face east? अगर आप ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो आपके पीछे क्या होना चाहिए? West. Very good. So my dear students, from here we will move forward towards the pictorial map of neighborhood. So ये कुछ देखा देखा लग रहा है आपको, है ना? हमने ये पहले किया है previous class में और आप you were able to locate different places on a pictorial map जैसे कि school, hospital, playground, masjid, your own home. So these were the different places, banks, libraries. So you were able to locate them by just looking at them in the picture map, pictorial map में जिसमें different pictures दी हुई हैं. So you know what is a map. किसी भी बड़ी सी जगह को जब हम अब एक पेपर के ऊपर या स्क्रीन के ऊपर छोटा कर देते हैं, that becomes the map of a place. So today you will able to locate different places just by looking at the directions. ठीक है, आप directions से places को locate करेंगे आज के lecture में. So my dear students, let's quickly look at the objective given on page number 5. Name places towards north, south, east and west of the school or home. आपने अपने school या home के इर्द गिर्द जो different places हैं उनको locate करना है. So my dear students, from here we will move forward towards the Islamic perspective. The Prophet, peace and blessings be upon him, said, whatever is between east and west is the direction of prayer. ठीक है, ईस्ट और वेस्ट के दरमियान में जो भी जगह है अल्लाह ताला ने कहा है वो हमारा किबला उस तरफ होता है, तो दैट इज टुवर्ड्स नॉर्थ. ठीक है, तो वो हमारी नमाज की जगह है. देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें डायरेक्शंस के थ्रू बताया कि किस तरफ आपने मुंह करके नमाज पढ़नी है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स सम प्री रीडिंग क्वेश्चंस. क्विकली टेल मी, हैव यू नोटिस्ड इन व्हिच डायरेक्शन ऑफ योर हाउस द सन राइजेस? ये हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आपने नोटिस करना है सुबह सुबह स्कूल जाने से पहले, क्योंकि यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सो यू हैव टू सी कि लेफ्ट राइट बैक फ्रंट कहाँ से जो है आपका सूरज निकलता है आपके घर के. सो दैट विल बी ईस्ट ऑफ योर होम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट फ्रंट, बैक, लेफ्ट और राइट? मैं अपने घर का आपको अगर बताऊं तो फ्रॉम माई हाउस द सन राइजेस फ्रॉम द लेफ्ट साइड. So that means मेरे घर के लेफ्ट साइड में क्या है? ईस्ट है. So you have to think and tell me कि कहाँ से सूरज निकल रहा है. Okay, my dear students, from which direction the sun rises? The sun rises in the east. Very good. Okay, my dear students, now quickly open page number 7 in your books. I hope everybody has opened page number 7 in their books. So my dear students, today we will do a project number 1, as you can all see. So my dear students, आज हम project में क्या करेंगे? You can see a small map here, and how well do you understand the directions? आपको यहाँ पर directions भी given है, north, east, west and south. Reproduce the given map on a chart paper. Observe the directions of the given map and राइट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं. ये मैप जो है ये आपको विद द हेल्प ऑफ योर टीचर
टीचर खुद से पहले से भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं इसको. विद द हेल्प ऑफ स्टूडेंट्स भी जो है आप इसको दोबारा एक चार्ट पेपर पे बड़ा सा ड्रॉ करें और उसके बाद स्टूडेंट्स विल आंसर दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ दीज डायरेक्शंस. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई विल शो यू the map on your screens. Here you can see it. मैंने इसको screen पे भी reproduce किया है in the bigger form. Also, I have reproduced it on a chart paper. You can see it. I hope everybody can see it clearly. यहाँ मैंने directions भी जो है वो draw की हैं, east, west, north and south. And you can see कि exactly जैसा कि आपको आपकी screen पे नजर आता है वैसा ही आपको चार्ट पेपर पे भी नजर आ रहा है. यू कैन अगेन सी इट ऑन द चार्ट पेपर. सो नाउ यू हैव टू आंसर अ फ्यू क्वेश्चंस. Okay, my dear students, now one by one I will ask the questions, so you have to answer them. You are in the toy store. So now quickly tell me, where's the toy store? I will circle it for you. Quickly look at in your books. Toy store, okay? You want to go to the supermarket. Now, where's the supermarket? This is the supermarket. In which direction will you move? Okay, now you have to take directions from here. So, here is the toy store. So, now moving towards the road, आप कौन सी direction में move करेंगे? We will move towards north. Very nice. Okay, now next question. You have to go to your parents to the hospital. You have to go with your parents to the hospital from the supermarket to see your uncle. In which direction will you move from supermarket? Okay, now again this is supermarket. And where's the hospital? Here is the hospital. So my dear students, again look at the directions and tell me in which direction now you will move. We will move towards west. West में ही है hospital, so we will move towards west. Okay, next question. Question number 3. In which direction will you move to go to the toy store from hospital? अब दोबारा हमारी shopping कुछ incomplete रह गई थी toys की. So we again want to go to the toy store. So from hospital, where will you move? So again look at the directions. Here is the toy store and this is the hospital. So we are moving towards east. So this is how you can locate different directions on the map. एक क्वेश्चन मैं जरा अपनी तरफ से भी पूछना चाहती हूँ. Now from the toy store you want to go to the railway station. Now in which direction will you move? Yes, you will move towards south. Excellent. So that is how you can locate different directions on a map by just looking at east, west, north and south. ठीक है, cardinal directions जो हैं इनको देखते हुए आप मुख्तलिफ directions में move कर सकते हैं on a map. From here we will move forward again. So some tidbits are given here. The earth moves in two ways. The earth, अच्छा अब earth की दो तरह की movement है. It is not the sun which is moving. Basically it is earth which is moving. Sun stationary है. Sun move नहीं करता. It is earth which is moving. और अर्थ की जो मूवमेंट है अराउंड द सन इट इज ऑफ टू टाइप्स. ये कितनी टाइप्स की है? टू टाइप्स की है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. ठीक है, एक तो अर्थ जो है वो फॉर एग्जांपल दिस इज सन, ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है. ठीक है, दिस इज अर्थ एंड इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. और एक और मूवमेंट है और ये इसको 365 डेज में जो है एक रेवोल्यूशन अराउंड द सन जो है उसको कंप्लीट करता है. द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस. ठीक है, और अर्थ जो है ये अर्थ है तो ये ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे भी घूम रहा है. तो अर्थ की दो तरह की मूवमेंट्स हैं. एक तो अपने एक्सेस के इर्द गिर्द घूम रहा है और एक सन के इर्द गिर्द घूम रहा है. ठीक है, तो मैं आपको जरा घूम के दिखाती हूँ. अर्थ ऐसे ऐसे भी घूम रहा है और ऐसे ऐसे घूमता हुआ जो है वो अर्थ सन के इर्द गिर्द भी घूम रहा है. सो यू कैन सी, ये आप लोग एक्सेस पे टर्न करके भी देख सकते हैं. मैं आपको पिक्चर फॉर्म में भी दिखाती हूँ, बट फर्स्ट लुक एट दिस. लेट मी इरेज द इंक. Okay. The sun is stationary. It does not rise and set. It seems rising and setting because of the earth's rotation on its axis from west to east. अब मैं आपको picture form में दिखाती हूँ. What does it mean? So here you can see this is sun and the earth is moving around it. तो ये जो movement of earth है around the sun, it causes
ये 365 डेज में जो है कंप्लीट होती है। और अर्थ आपको नजर आ रहा है कि एक स्टिक इसके दरमियान में है एंड इट इज मूविंग अराउंड इट। ये देखें, तो ये अपने एक्सेस पे भी टर्न करता हुआ सन के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो जो इसकी मूवमेंट है अराउंड द एक्सेस, दिस इज कॉजिंग डे एंड नाइट। ठीक है, सन मूव नहीं करता, बेसिकली इट्स अर्थ व्हिच इज मूविंग। अगेन आई कैन शो यू हियर, ये एक्सेस है और ये अपने एक्सेस पे भी घूम रहा है। ठीक है, और सन के इर्द गिर्द भी घूमता है। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, टू टाइप्स ऑफ मूवमेंट। So my dear students, for the practice, here you can see the worksheet, north, south, east and west directions. Use the map to complete the sentences below. Circle the correct answer. Then write it in the spaces provided. ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ fill in the blanks दी गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा zoom in करके दिखाती हूँ first। ठीक है, आपको यहाँ पर एक मैप दिया गया है, की भी दी गई है इसकी, ये माउंटेन्स हैं, ये लेक है, ये हिल है, ये प्लेन है, ये फॉरेस्ट है, ये जो सर्कल है दिस शोज टाउन एंड दिस इज द रिवर। ठीक है, और यहाँ पर आपको डायरेक्शंस भी दी गई हैं। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज, लेट मी रेज द इंक। ठीक है, अब आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स दी गई हैं, तो आपको करेक्ट फॉर्म करना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, यू विल डू द रेस्ट बाय योरसेल्फ। द टाउन इज डैश ऑफ द फॉरेस्ट। नाउ फर्स्ट वी हैव टू लोकेट द फॉरेस्ट, दिस इज द फॉरेस्ट एंड वेयर इज द टाउन, दिस इज द टाउन। ओके, नाउ कौन सी डायरेक्शन में है, यू हैव टू लुक एट द डायरेक्शंस, इट इज इन द ईस्ट, सो यू हैव टू सेलेक्ट द आंसर ईस्ट एंड देन यू विल राइट इट हियर। वेट, okay, now east. So this is how you will complete it. Look at the map and then answer the fill in the blanks. Select the correct option. From here we will move forward towards the evaluation. So my dear students, for evaluation, how do directions help us in understanding the position of an object? So directions आपको एक object की position कैसे बताने में हेल्प करती हैं? यू कैन इजीली लोकेट देम बाय जस्ट नोइंग द डायरेक्शंस। आपको पता चल जाता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट किधर है या कौन सी प्लेस किधर है। हाउ डू यू नो अबाउट द लोकेशन ऑफ अ प्लेस? जस्ट बाय नोइंग इट्स डायरेक्शन। वेरी गुड। फ्रॉम हेयर वी विल मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द होमवर्क। सो माय डियर स्टूडेंट, होमवर्क के लिए आपके लिए एक इंडिपेंडेंट एक्टिविटी है। इट इज गिवन ऑन योर बुक, आपकी बुक में ही ये गिवन है ऑन पेज नंबर 7। सो इन दिस एक्टिविटी यू विल राइट डाउन, आपको आपकी टीचर वर्कशीट देंगी और आप ये एक्टिविटी यहाँ पर करेंगे। विद द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस ड्रॉ अ मैप ऑफ योर एरिया शोइंग पोजीशंस ऑफ योर स्कूल, मस्जिद, पार्क एंड हॉस्पिटल फ्रॉम योर होम। ठीक है, आपको मैंने यहाँ पर डायरेक्शंस भी गिवन है और आपका घर है माय होम। अब यहाँ से आपको ये चीज़ें जो हैं इनकी डायरेक्शन बतानी है। इट इज़ इन ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट और साउथ, कौन सी चीज़ किधर लोकेटेड है। सो यू हैव टू डू इट on the worksheet. This will be provided to you. आपकी book में given है, but I have made a worksheet for it so that you can easily make the map on it. So my dear students, ये थोड़ा सा zoom in होके दिखा दिया मैंने आपको। So my dear students, from here we will move forward towards the wrap up of the lesson. I hope you have enjoyed the activity. Sun gives us heat, light and energy. There are 4 directions: north, south, east and west. The sun rises in the east and sets in the west. Directions help us in understanding the position of an object. तो आज हमने ये पढ़ा कि सन हमें और बहुत से बेनिफिट्स के साथ हमें डायरेक्शंस फाइंड आउट करने में भी हेल्प आउट करता है। We can easily find out east, west, north and south, and then we can know the position of a object or a place. So my dear students, I hope you have enjoyed the lecture, you have enjoyed the project. Keep everybody around you safe. Have a good day and Allah Hafiz.